2015 का मेंटेनेंस केस है, 2022 में हम लोग हैं और अब आप ये सब 4 साल का डिले के बाद रिवीजन फाइल कर रहे हैं। क्योंकि एक्स पार्टी हो गया, हम कुछ नहीं है, फ्रिवलेस केस एक्स पार्टी हो जाएगा। 3 मैटर इम्प्रेशन पर है, उसके बाद तो जो सिचुएशन गड़बड़ हो गया तो पड़ा रह गया होगा। कितना डिले है? डिले हुजूर बहुत दिन है, 1520 दिन का हुजूर। 1520 दिन तो एक पार्टी हुजूर हो गया था, हमको पता नहीं था। मेंटेनेंस मैटर है, मेंटेनेंस मैटर सब वही होता है। सब आप लोग इग्नोर करके रखिए प्रोसीडिंग को और उसके बाद एक बार प्ली ले लीजिए हाई कोर्ट में। 2019 से फाइल करके रखे हुए हैं। दे रहे हैं कुछ वाइफ को कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तो हुजूर कुछ नहीं दे रहे हैं। और आपको सैलरी कितनी मिल रही है? चौकीदार हुजूर है 14,000। चौकीदार आप हैं, आपकी पत्नी है, मलॉर्ड। आप कुछ इनको दे रहे हैं मेंटेनेंस? हमको अगर नोटिस मिलता तो जो हम रख नहीं, आप रखे, आपको इनके ऊपर दया नहीं करेंगे रख करके। हम आपकी वाइफ है और आप नोटिस मिलने की बात कर रहे हैं। आपको जब ये डायरेक्शन हुआ कोर्ट से, कितना 3,000 रुपया मात्र है, इसके लिए आप रिवीजन फाइल कर रहे हैं। 4,500 रुपया है। 4,500 हुजूर अगर वहाँ अपेयर करते नोटिस मिलता तो हम रखने के लिए तैयार हैं। मिस्टर मुखर्जी, यू नो दीज आर स्टीरियोटाइप आर्गुमेंट्स सर, हमेशा हर केस में सुन। आप ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है? 13,000 हमको हुजूर एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर 13,000 हुजूर रिकॉर्ड में है। कुछ तो बोलिए, कुछ खुल करके बताइए। ऐसे आप होल्ड क्यों कर रहे हैं? आज की तारीख में 13,000 रुपया सैलरी होता है क्या किसी सरकारी नौकरी? चौकीदार हुजूर है। तो चौकीदार है तो क्या हुआ? चौकीदार को तो रेगुलर वेतन भी हुजूर नहीं मिलता है। तो बढ़ के 30,000 हो गया। चौकीदार को तो जो रेगुलर वेतन भी नहीं मिलता है। कहाँ ये सब जो केस आपका नहीं है उसमें क्यों जा रहे हैं? जो हुजूर है हुजूर 13,000 रुपया है। तो 13,000 में 4,500 दिया अगर आपकी वाइफ और बच्चे के लिए कोर्ट में। हम उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं। हम हुजूर है कि अभी भी है कि हम उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। नहीं हुजूर, ये का एविडेंस है कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, हमको क्या रखेंगे? जो भी है आपकी वाइफ और बच्चे के लिए दिया है। 2015 का मेंटेनेंस केस है, 2022 में हम लोग हैं और अब आप ये सब 4 साल का डिले के बाद रिवीजन फाइल कर रहे हैं। क्योंकि एक्स पार्टी हो गया, कुछ नहीं है, फ्रिवलेस केस एक्स पार्टी हो जाएगा। चौकीदार हैं, दरवाजे जाते हैं, हर को जानते हैं और इनके खिलाफ केस है, इनको पता ही नहीं। नोटिस हमको नहीं मिला था हुजूर। नोटिस नहीं मिला था। एक बार हुजूर पेज 2 जजमेंट का हुजूर, ऑर्डर का पेज 2 पारा फर्स्ट में हुजूर 5-6 लाइन के नीचे जब देख लिया जाएगा, कह रहे नोटिस नहीं मिला। नोटिस इशू हुआ है, मिला नहीं है। उसमें भी कहाँ है कि मिला है? आप पर कॉस्ट लगाएंगे हम लोग। पेपर पब्लिकेशन तक हुआ है प्रभात खबर में। टेक कॉस्ट, टेक कॉस्ट। आई विल रिकॉर्ड योर कंडक्ट। एक बार हुजूर कोई मौका का सवाल नहीं है इसमें। मौका क्या है? आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, बच्चे को। एक बार इनको रखने का हुजूर। इनका कौन है एम्प्लॉयर? कौन है जहाँ भेजना है इनको? बोलिए, डिडक्ट करेगा इनकी सैलरी से। कमाल कर रहे हैं आप। 2019 से रिवीजन 4 साल के डिले से लगा करके और एक बैठे हुए हैं आप। तो बैठे हुए कहाँ? क्यों? आपने क्या भेजा आज तक बताइए? आप 50% भी दिया इनको। आपको ये समझ में आई कि हाँ हमारी वाइफ और बच्चे हैं, इनको कुछ तो भेजे हम मेरा परवरिश के लिए। मेरा हुजूर यही है कि हम रखने के लिए तैयार है। हुजूर इसको स्टीरियोटाइप माना जाए या जी, ये सब जो हुजूर इंस्ट्रक्शन वही के सामने में हम लोग बोलते हैं। ये सब आप भी समझ रहे हैं। आपको बोलने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं। इससे ज्यादा आप कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एडमिटेड आपका सैलरी जो है उसका 1/3 उसने दिया है कोर्ट ने। तो 1/3 आपकी वाइफ और बच्चे अगर हैं तो उसको नहीं दीजिएगा। नहीं हुजूर, उस पर क्या सिंपैथी आपसे होना चाहिए? पर हुजूर हम नहीं जा रहे हैं। हम हुजूर मेरा बस इतना ही सा है। आप कानून पर जाइएगा नहीं। आप जो है कोई अदर कंसिडरेशन जो
सेक्शन 125 CRPC क्यों लाया गया? हुजूर के सामने बस उतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग योर सबमिशंस बट इट इज नॉट अपीलिंग में। रखना नहीं रखना वो मीडिएशन में जाइए, वहां जाकर के फाइल कीजिए एप्लीकेशन कि हम रखना चाहते हैं। आपने आज तक कोई पिटीशन फाइल किया है? तो फाइल किया है, एक्सपर्टी ही हो गया तो फिर अब क्या करेंगे हुजूर? हम एक्सपर्टी ही हो गया तो फिर हमारे पास अब मेरे पास तो आपके मेरे पास कहने का जगह खत्म हो गया ना। तो कहने के लिए आज का दिन रखे हुए थे क्या मुकर्रर की जब कोर्ट में केस होगा तब बोलेंगे? जब हुजूर पता चला हम हुजूर रिवीजन फाइल किए, रिवीजन के बाद हुजूर मुखर्जी साहब आपने आज का दिन मुकर्रर कर रखा था कि जब कोर्ट में कॉल होगा तब हम ये बात बोलेंगे, उसके पहले नहीं बोलेंगे। हमको हुजूर जब बोलने का मौका मिलेगा तभी ना बोलेंगे। कितना कॉस्ट लगा है आपको बोलिए? वाइफ को वकील रखना पड़ा, जिसको 1 रुपया मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं उसको वकील रखना पड़ा, और भी झाजी पूरा फीस लेके आते हैं। ना फीस का ही आते नहीं है। गरीबी देखे उसका, गरीबी देखे उसका फी नहीं लिए, मतलब वेरी फेयरली सही। आप फीस नहीं लिए हैं तो ठीक है, वो आपकी मानता है, लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं कि आप बिना फीस का नहीं आते। सारी फ्रिवलस बात ये कर रहे हैं। छोड़िए ना, आप बहस क्यों कर रहे हैं? इनको सोचने दीजिए थोड़ा। कुछ तो इनके अंदर की वकालत के बाद कुछ तो बात आएगी ना, कहीं रीजनेबल, ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। वकालत थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद मुखर्जी साहब सोचेंगे कि क्या सही वकालत कर रहे हैं इस केस में। जो जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अलावा तो जो आप वकील हैं, आप इंस्ट्रक्शन की बात मत कीजिए। You are an officer of the court, and what the Supreme Court has said in UP law officers case, I always remind myself also and the bar. भी हुजूर नहीं बोल सकते हैं जो हुजूर के सामने में हम नहीं रख सकते। A lawyer is not a parrot in the hand of his हुजूर नहीं बोल सकते हैं जो हुजूर के सामने में हम नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और कुछ है? हुजूर के सामने में तो रख ही दिए हैं, एक बार चांस हमको मिलना चाहिए कि वो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। दैट इज ऑलवेज ओपन टू यू। हु स्टॉप्ड यू? हु स्टॉप्ड यू? उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत थी क्या? अपनी वाइफ को घर लाने के लिए मीडिएशन में जाकर के समझौता करके घर लाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत थी क्या? लिखिए। Heard Mr. Ajay Mukherjee, lead counsel for the petitioner, and Mr. Ranjan Kumar Jha, lead counsel representing the opposite party number 2. Full stop. This revision application has been preferred for setting aside the order dated 24th day of June 2015 passed by learned Principal Judge Family Court Bhagalpur in miscellaneous within bracket maintenance bracket closed case number 95 of 2012, by which the learned Principal Judge has been pleased to allow the application under section 125 CRPC filed on behalf of the applicant as wife and directed the opposite party as husband to pay a sum of rupees 3,000 per month towards her monthly maintenance and a sum of rupees 1,500 for her minor son. Full stop. Next. A perusal of the impugned judgment would show that despite all
steps taken in the learned court below. The notices could not be served upon the petitioner. No, not served monthly. The opposite party did not appear. Whereafter a substituted service was done by way of a paper publication of notice in the daily Hindi newspaper Prabhat Khabar, which is widely circulated in the area where the opposite party resides. Full stop. Still the opposite party did not appear in the proceeding, and the learned court had no option but to proceed with the matter ex parte. Next, it further appears that the applicant wife proved her case by examining herself as PW1. Full stop. She was supported by her father within bracket PW2. Full stop. She proved the status of her husband and the salary being paid to him in the year 2013, and the same has been marked as Exhibit 1. Full stop. Exhibit 2 is a certificate issued by the Mukhya of the Gram Panchayat, Sankarpur Block, Mehrama, District Godda, by which it is certified, it has been certified that Dhanyog Paswan, son of Tarkeshwar Paswan, has married another lady, namely Lalo Devi, daughter of late Ambika Paswan. Full stop. Next, the learned principal judge has considered the materials on the record and found that the applicant and her minor son were neglected by the petitioner before this court. Full stop. He has married to another lady and is residing with her since August 2011. Full stop. Taking into consideration the amount of salary which the petitioner was getting in the year 2013, the learned court below has allowed 1/3 of the said amount towards maintenance of the applicant wife and her minor son. Next, this revision has been preferred with a delay of 4 years and 2 months. Full stop. Mr. Mukherjee, learned counsel for the petitioner, submits that the
125 CRPC proceeding was conducted ex parte, and there being no adequate opportunity to the husband as petitioner to defend himself, the impugned judgment is liable to be set aside after condonation of delay in filing of the present revision application. Full stop. Next, Mr. Mukherjee, however, does not dispute that the applicant wife and her minor son are legally wedded wife of the petitioner and son respectively. Full stop. It is also not disputed that the petitioner is a chowkidar and at the relevant time he was drawing a salary of rupees 13,000 approximately. 11,754. About 12,000. About 12,000. Full stop. Next, Mr. Ranjan Kumar Jha, Land Counsel for the opposite party, has opposed this application. Full stop. Attention of this court had been drawn towards the observations of the learned principal judge recorded towards the end of paragraph 2 of the impugned judgment, where the learned court has discussed that the notices were issued to the opposite party by both modes, that is through process server as well as the registered post, but the opposite party did not turn up. We'll stop. Lastly, publication was made in daily newspaper, namely Prabhat Khabar, which is widely circulated in the locality where the opposite party is residing. Full stop. Under these circumstances, the court had proceeded with the matter ex parte, and the case was fixed for ex parte hearing on 2/4/2014. Next, Land Counsel submits that in this case, on a bare perusal of the application seeking condonation of delay, this court will notice that there is no averment saying that no notice was served upon the petitioner. Full stop. A completely vague kind of a statement has been made in paragraph 7, saying that the petitioner had no knowledge about the impugned judgment. Full stop. He nowhere says that he had no knowledge of the case or that he was never served. कहीं है आपका स्टेटमेंट? है ना भैया? आइए में उस तरह का नहीं है, मगर जो है नो नॉलेज का तो हुजूर देख ही लिया है। आइए में नहीं है ना, नो, देयर इज नो स्टेटमेंट दैट यू वर नॉट सर्व्ड। ना, ऐसा हुजूर नहीं। ठीक। नेक्स्ट, Mr. Jha submits
that this is a frivolous kind of application which has been filed after more than 4 years just to avoid payment of maintenance. Full stop. Land Council submits that in this way the applicant wife has not only been deprived of the paltry amount of maintenance which was awarded to her and her son, she has been further compelled to contest this matter in this court. Full stop. Next. It is his further submission that the present salary of the petitioner has gone up to rupees 30,000 per month, but he is neglecting his wife and minor child, and is not paying a single farthing to the opposite party. Next. Having regard to the submissions noted herein above and the materials available on the record, this court finds much substance in the submissions of learned counsel for the opposite party. Full stop. This revision has been filed after more than 4 years of passing of the impugned judgment. Full stop. There is no averment at all in the petition seeking condonation of delay that the petitioner was not served with any notice of the case. Full stop. There is no averment that he was not aware of the case. Full stop. A vague statement has been made that he had no knowledge of the impugned judgment, and therefore there is no willful delay or laches on the part of the petitioner. Full stop. Apparently the statements made in the petition seeking condonation of delay does not inspire confidence. Full stop. The delay is inordinate, and the conduct of the petitioner, who is a chowkidar, in not putting appearance before the court below, further indicates that he was avoiding the proceeding. Full stop. Under these circumstances, in the opinion of this court, the inordinate delay of more than 4 years is not fit to be condoned. Full stop. Therefore, condonation of delay is thus refused in the facts and circumstances of the case. Full stop. As a result of dismissal of the petition seeking condonation of delay, the revision application also fails. Full stop. The learned Principal Judge, Family Court, Bhagalpur, shall ensure enforcement of the impugned judgment without further delay. Full stop. In this connection, appropriate order be passed. इन कौन है एम्प्लॉयर इनके? CO मेहरमा गुड्डा. ऐसे कीजिए. In this connection, the CO, Circle Officer Meherma Gudda, under whom the petitioner is working, is directed to
facilitate, directed to cooperate with the learned court below in enforcement of the order, if required by deducting the amount from the salary of the petitioner and remitting the same to the account of the opposite party. Full stop. The application stands disposed of accordingly. Aja, cost may be. Just a minute. In the facts of the present case, where this court finds that the petitioner has not paid a single farthing to his wife and filed the revision application after more than 4 years, and then the revision application was kept pending remained pending for another 3 years, but during this period he has not paid a single farthing to his wife. This court understands that the wife as opposite party has made out a case for award of some cost of litigation. Full stop. This court therefore directs the petitioner to pay a sum of rupees 25,000 to the opposite party within a period of 4 weeks from today to meet her legal expenses. Full stop. Next. That counsel for the petitioner has submitted that the petitioner wants to resolve the dispute through mediation. चाह रहे हैं ना? हाँ लॉर्ड, चाह रहे हैं. Full stop. If it is so, it is open for him to file an appropriate application in the learned court below for sending the records to the mediation center to take steps for mediation. But this will in no way stall the recovery proceeding. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Item number 15.